of these actions, then of course it is our job to make sure that the world knows of what's happening over here. Here. ये बताएं कि अभी आप पाकिस्तान गई हैं, वहाँ पे जो इंडिया के सर्विलेंस मुकाबले थे, क्या इस हवाले से उससे बातचीत हुई और मुकम्मल खत्म हो गई या अभी भी मौजूद है? दूसरा ये कि इंडिया कोई बालाकोट जैसा ड्रामा करने के मूड में बारिश के खिलाफ India had been using one side terrorism in Pakistan. अब चूँकि तालिबान वहाँ पे हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया आसान, क्या ज़रूरियत है इसमें या आपके यहाँ या हमारे यहाँ कोई एविडेंस है कि वन साइड जो है टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो? Okay, so जैसे भी आपने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डोजियर हैं जो इस वक्त आप इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन के जो टेक्निकल बुलाना चाह रहे हैं, इन तमाम हालात के बावजूद क्या आप समझते हैं पाकिस्तान भारत के माबैन जो तल्खात वो लागू हो जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो स्टेट टेररिज्म की हमारे पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अगर इस केस की बात करें, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें भी एक थर्ड कंट्री है जिसके अंदर ये सारा कुछ बनाया गया। वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ कैदियों को वहाँ से ले कर आके फिर उनको इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। एक जो रिलीजियस डिग्निटी थी जिसको इंटरनेशनल बैन किया गया और उसके बाद वो टारगेट थे। तो क्या इस हवाले से, क्योंकि ये सिलसिला जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को पाकिस्तान और इंडिया के माबैन क्या रिलेशन इस सिनेरियो में बाहर किए जा सकते हैं? Okay, no more supplementaries. There cannot be supplementaries. This is a full-fledged question. We will come back to that. So this is somewhat connected, but it's not really connected, right? But just let me say that I think the lack of attention of the world on the direction and the slip that India has made is dangerous not only to my region, but to the entire world. Because this is a nuclear-armed country which does not desist from attacking another nuclear-armed country or sending fighter jets into another nuclear-armed country for political designs for electioneering. This is a serious matter, right, which is not currently on the mainframe of world concern, but the direction that India has taken has an impact right now in its own neighborhood only, but soon the impact will be felt in the wider neighborhood, I feel. And this evidence of that direction is everywhere. India was known for its secular values. Now what is India known for? For only being a country which is meant for a certain religious followers, where all other religious followers would be, frankly speaking, persecuted and you know, Citizenship Amendment Act, this, that, the other. What they did in IIOJK, okay, and then to expect that everybody can just happily forget that there are Security Council resolutions on Indian occupied Jammu and Kashmir. Okay, so these are all, so you can make as many narratives as you want, but the reality of the region or the reality of geography and the reality of the fact that there is a disputed territory in which India has been openly, you know, killing, maiming, using rape as a tool of state policy and doing all of that, those are realities that cannot be ignored. And sometimes they do find themselves on the cover of New York Times and other magazines, right? And if you, so that's what it is. But अगर आपके सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि 10 years from today, where do we want this region to be, right? I think it is a matter of not pride for me to say that we had more chance of removing some of the problems that we have with our neighboring countries 10 years back than we have today. That's not very complimentary on the direction that India has taken, right? So वो आपका सवाल का हो गया. दूसरा आपने बोला कि देखिए, as far as this dossier is concerned, this particular dossier is focused on this Lahore incident, on the Johor Town incident. So किसी ने पूछा कि foreign soil इस्तेमाल, this is completely focused on that.
और बाकी आपने कहा कि बालाकोट जैसा इंसिडेंट दोबारा कर सकते हैं। अब देखें, मैंने जैसे कहा, आई थिंक इनके सवाल में मैंने आपके सवाल का भी जवाब दे दिया कि जो ये कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको एविडेंस मिल गया है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था और इंडिया ने फिर भी इस तरह का किया, इलेक्शन से थोड़ी देर पहले उस दिन इनका इलेक्शन रिजल्ट भी उनके लिए आ गया, सो दैट जस्ट शोज यू दैट दैट दिस इज व्हाई आई कॉल इट अ रोग स्टेट। दे आर विलिंग टू टेक एनी टाइप ऑफ adventurism and chances to be able to have political interests met. So this is obviously very, very problematic. Yes. Mm. 14th of November 2019, we saw DDIS, the then DDIS and the predecessor Mr. Congress were here, putting out the dossier on India's involvement to Afghanistan, in Pakistan. Then this last year, as well when this last happened, we saw the then NSC address the press conference with the then DM minister saying the exact same things which we're hearing a year and a half on. So first is why now, and is the dossier diplomacy actually working, or are there no new ideas because previously we've seen that this diplomacy or this policy has not really worked out? Thank you. Okay, I think you have a very good point, but allow me to disagree because I do not think there's a dossier diplomacy happening here at all. At all. I am very against anything which is, which is not real. Okay, simple. So I would not at all call it dossier diplomacy. I think what it is evidence being shared on a certain country's activities within the region. That certain country continues to project itself, as I said. It's a remarkable feat that they've been able to accomplish. Remarkable. I think we should learn from them. Because being the biggest perpetrators of terrorism, India, with hard, solid evidence which is available to us in many, many forms, and what more evidence do you want than their own, agent being caught red-handed? And then all of this evidence which is in this dossier also and in the previous dossiers. But that perpetrator of terrorism continues to play the victim card to the best of its availability. And the more terrorism it perpetrates, the more victim it projects itself. Because right now, you've seen an upswing in the Indian projection of themselves as the victims of terrorism. However, all the acts of terrorism have been happening in Pakistan. So one is asking the question, we cannot be blind to evidence. So what we want is, through these dossiers, I would not at all call it dossier diplomacy, I would call it evidence-based information sharing. Okay, that's what it is. I don't think we seek anything more than that. What we seek is, when you keep on giving the same information, this is not the same information, this is different incidents, different role that they have played in different places, all having one common theme, terrorism. Right? So this is just sharing evidence, sharing information on what India has actually been up to. Now that may not immediately change somebody's reaction. There are many exigencies which are at work, but it at least puts the record straight. And I think there are many entities, many countries which are fully cognizant of it. Okay, so that's what it is. Why now? Why now? Because now, as I said, are you questioning the state that we're in? No, simply. I can tell you why now. Because we've gone through the stage of issuing red warrants. Okay, so we're at a stage where the first perpetrators, the people who were used, have already been given punishment. The ones who were facilitators, we have been able to ask for mutual assistance, mutual legal assistance, and issue red warrants. But the masterminds still remain under state patronage. That's why now we are at stage 2, and we want to get to stage 3. Take it. This will have to be the last question. We have the Tajikistan president. तीन लोगों के रेड वारंट्स जारी हो चुके हैं, तीन के प्रोसेस में तीन को उपयोग किया गया है, ये आप वैसे पर्सनली समझती हैं कि ये की एक्सरसाइज है, इंडिया इन लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर देगा इंटरपोल की थ्रू या इस तरह से एक ये बताइए कि इस एक्सरसाइज का क्या नतीजा निकलेगा। दूसरा ये बताइए कि अफगानिस्तान में आप गई, वहाँ पे जो भी ये चीज़ें होती हैं, तो हम कंसिस्टेंट हमारा एक व्यू रहा है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। और अभी जो रिसेंट वेव आई है KPK
115 पुलिस वाले 11 मामले मारे गए हैं, इसी तरह 1000 से ज़ायद अटैक हुए हैं। तो इनमें कोई ये नज़र आया आपको कोई रॉ या इंडिया उधर से बैठ के जहाँ पे आना? और आखिरी एक लाइन में कि कभी आपका छोटा सा तरीका रह गया मनोबल इस गवर्नमेंट का इस सारे मामले में कि हमने उनको कह दिया वो हम पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम हिंदुस्तान भी लगाता है और हमने तो ये एविडेंस के साथ ये बात कर दी, कोई वे वो आपको फॉरेन मिनिस्टर नजर आती है कि हम? पाकिस्तान ने कई बार भारतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। 3 वर्षों में 221 अहलकारों को निशाना बनाया गया। लाहौर वाक़े के ज़िम्मेदारान भारत की पनाह में हैं और जौहर टाउन वाक़े में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। भारत अपने हमसाये ममालिक को अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार करने में सरगर्म है। Achha, will India give these people over? We would hope, as a claimant of wanting to follow rules, processes, legal systems, clearly India would, right? Why would it not? And that is what we should consider from a responsible country. Is India a responsible country? I think that's a question that India has to answer. So my question is India a responsible country through these? Now, I think you have to be, I'm going to once again use this opportunity. पहले मैं आपके आखिरी सवाल का पहले जवाब दूंगी और आपने जो बीच वाला सवाल किया उसका बाद में। पॉलिसी स्टेट की होती है, पाकिस्तानी लोगों की इंटरेस्ट की होती है. आई वुड एक्सपेक्ट इनफ मैच्योरिटी इन द पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम टू डू व्हाटएवर वी स्टार्टेड व्हिच इज गुड टू बी कैरिड फॉरवर्ड. And I think that's why I believe in a very strong institution in the face of in the form of the Foreign Office, because it is institutions like this which continue to guide and take guidance from political and dispensations. And I believe this institution is one which has been able to carry that mantle forward. Governments will come and governments will go, and governments will inshallah in future continue to पूरी अपनी term करें, but state policy is guided by states' interest, and I think that आज मैं हूँ, हमने बहुत सारा काम कोई हमें जो अच्छा लगा हम उसको फॉरवर्ड लेके गए. इस्लामोफोबिया पे उन्होंने अच्छा काम किया, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं. सो जो हमें अच्छा, सो दैट आई वोंट बी कंसर्न अबाउट हम जब तक हैं ये ऑफिस चलेगा और उसके बाद नहीं चलेगा. हमारे बाद भी चलेगा और हमारे से पहले भी चलता रहे और बहुत अच्छा चलता रहे. ओके, नाउ आप कह रहे हैं कि क्या आपको रे ऑफ होप नजर आती है. देखिए मैं आपको एक सिंपल बात, एंड आई विल से दिस, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सम रियलिटी to how we conduct policy. I went to India as the first foreign minister of Pakistan who was born after the 1971 war. When I went to India, I said that we would hope that this process that we've started is not something that can be, that it cannot be stopped at any time. That no forces will be able to stop this process now. That we will continue to make gains. कभी ज़्यादा गेंस कर लेंगे, कभी कम करेंगे, बट एक मूवमेंट चलती रहेगी. एंड वी पुट आवर नेक ऑन द लाइन, आवर पॉलिटिकल नेक ऑन द लाइन टू से MFN स्टेटस इंडिया को देना चाहिए. इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन किया एक ताल्लुक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या था कि इंडिया के साथ जो हमारे बास्केट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनमें भरने के बजाय उनको हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहिए. नाउ व्हाई वर वी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट? Because on the other side, we had the person of Prime Minister Manmohan Singh, who wanted his legacy as a peace builder, who wanted his legacy to say कि हम सियाचिन को mountain of peace में convert करना चाहते हैं, right? You need a player on the other side who's sending messages. Now, in the last 10 years, what messages has India sent to Pakistan? Do you want to go through the list of messages? Balakot, fighter jets, IIOJK. What messages has sent internally to its own people? Now the world can turn a blind eye to it. Unfortunately, we can't turn, because we are on the receiving end of this hegemonic, benevolent behavior of a very large country which also happens to be a nuclear state. Now, when everybody talks about threat perception, and you're seeing this a lot in the Indo-Pacific strategy and that arena, now can you imagine the threat perception of a country like Pakistan being a neighbor of India and having gone through Balakot and having gone through all the other things which have happened, having gone through the Lahore incident? Do you think we have no right to feel threatened? Okay, so where we are today, we would hope that this ray of hope that you talk about is
you know, that we will see a rainbow one day. And unfortunately, I'm unwilling to lose more decades. कितनी generations? आप किस चीज़ को पालना है? Hostility को पालना है पूरी ज़िंदगी? ये तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है ना. But क्या इस वक्त आपके पास कोई glimmer of hope है? मुझे at much, you know, because I was a very, if you ask me, I will take the first opportunity that comes. But I was a pragmatist, I have to tell you. I don't see a glimmer of hope right now. We see a different message tomorrow. We'll be the first ones to let you know. Thank you very much. We'll किसका? अच्छा, अफगानिस्तान वाली बात देखिए, मैं एक और बात आपको बताती हूँ. मैंने ये लकली एक होता है ना, एक आपकी बेंच भी उस तरह होती है. But one thing that I've learned from conducting diplomacy, I'd rather conduct diplomacy than talk about the diplomacy that we do, right? So I choose the conducting of diplomacy, which requires you to keep quiet more than to speak. Okay? thank you very much. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है और पड़ोसियों के घर जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान सबूत के साथ दुनिया को भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों से आगाह कर रहा है. वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खार इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं. और अभी आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस. हेडलाइंस के लिए ताउन क्या है? जरासीम से हिफाजत भी, डॉक्टर का मशवरा भी. Jazz Super 4G. पाकिस्तान के भारत में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं. डोजियर भी भेज दिया गया है. वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खार की प्रेस कॉन्फ्रेंस. बलोचिस्तान समेत दीगर इलाक़ाजात में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में रॉ के मुलव्विस होने के ठोस सबूत हैं. सी पैक को मुतासिर करने में भारत का हाथ है. हिना रब्बानी खार ने भारतीय दहशतगर्दी को खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया. शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला. फायरिंग से 4 राहगीर जख्मी. जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया. कराची के इलाके लियारी में पुलिस और रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई. इंतहाई मतलूब गैंग वार्ड कमांडर निसार अहमद उर्फ मुल्ला निसार गिरफ्तार. संगीन वारदातों में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था. असेंबली जाना या न जाना पीटीआई का सियासी फैसला है. सियासी मामले पर अदालत में तबसरा नहीं करना चाहिए. नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. क्या सेनेट में नैब तरमीम पर बहस हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल. मामले की मजीद समाअत जनवरी 2023 के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी. IMF का प्रोग्राम ठीक हो गया तो हुकूमत किस बात के इल्जामात लगा रही है? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का हुकूमत पर अपनी कोताहियां छुपाने की कोशिश